Okay, so a very good evening to all. We have already covered the important physical and chemical properties of D block elements. So, in today class, basically, we are going to see the manganese compound, right? Okay, what are the various compounds formed by the manganese, and try to study their properties, their reaction, their oxidizing behavior. So, we are going to see all this thing in today class. Okay, so let's start with the session. So first of all, we all know about the potassium permanganate, right? In our titration experiment, that is a Mohr salt, we also use this potassium permanganate. With the help of potassium permanganate, we actually calculate the concentration or strength of the Mohr salt, right? Now, this is in a salt. So KMnO4, that is a potassium permanganate, is in a salt, and this is purple in color, right? कौन से color का होता है? Purple color का होता है. That is KMnO4. Now, when you heat this KMnO4 with KOH, basically KMnO4 plus H2O will form, right? So this salt gives us KMnO4 plus H2O. Okay. Now, there are various steps by which you'll actually prepare KMnO4. ठीक है. So कौन कौन से steps होते हैं? By what process and by which steps you actually prepare this? Let's discuss one by one. So first of all, you for the preparation of KMnO4, you need manganese dioxide, also known as pyrolusite, right? So you need this. Now, when you heat MnO2 with the KOH and O2, K2MnO4 will form, like potassium manganate will form. क्या बनेगा यहाँ पे? Potassium manganate. Now, this potassium manganate react with potassium carbonate, right? This potassium manganate, that is a K2MnO4. Just give me a second. This is equation number one, and this is second, and this is third, right? So these three reaction you need to remember. Okay, so you'll prepare potassium manganate either by heating MnO2 with KOH, or by treating MnO2 with K2CO3 and KNO3. So this is the two way by which you prepare potassium manganate. Done. Either treated with KOH or with potassium carbonate and potassium nitrate. Now, once you prepare this potassium manganate either by these two method, you just need to treat this potassium manganate with 2 moles of water. Then you'll get potassium permanganate, that is KMnO4, a purple color compound. Okay. Now let's see. In lab, how will you prepare KMnO4? So these are the laboratory method for the preparation of KMnO4. So we'll prepare KMnO4 by sorry, peroxodisulfate. When it is treated with this 8 mole of H2O, then we'll get permanganate ion, that is MnO4 negative. So remember the structure of H2O8, twice negative. So this is the structure of H2O8. S double bond O, double bond O. Again we have one S, double bond O, double bond O. This is O negative, O negative. And this is oxide linkage. कौन सा linkage है ये? ओ ओ, इसको हम बोलते हैं peroxide, right? This oxygen acts as a peroxide. Their oxidation number is -1 only. Okay, so this is the structure of peroxodisulfate. So we known as peroxodisulfate. Now, industrial method preparation of KMnO4. So MnO4 is prepared by the electrolytic oxidation, right? तो जब हम मैंगनेट का इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं मैंगनेट का, then you'll prepare permanganate. Okay, now let's see some important properties of this KMnO4, कि क्या क्या important property ये लोग show करते हैं. So first important property is this is a dark purple anhydrous and needle like crystal. ठीक है, so they are dark purple anhydrous होते हैं, there is no moisture, and they having needle like crystal. Now they are isostructural with KClO4, यानी ये isostructural होते हैं किसके साथ?
KClO4 के साथ. So with KClO4, they are isostructural. Let's see. So we know in case of IClO4, sorry, KClO4, the structure of KClO4 is tetrahedral, right? The structure of KClO4 is tetrahedral. So this is the structure of KClO4. K positive and Cl4 become negative. So normal Cl having 2 comma 8 comma 7, 7 valence electron. So chlorine negative become 2 comma 8 comma 8. It means they having 8 valence electron, so they will form 4 double bond with oxygen atom. So here we have one double bond, double bond, double bond, and this is a negative charge because this oxygen require only 2 comma 7. This require only one charge, one electron now. So they will form with single bond with this. So three double bonds and one single bond, right? Similarly, MnO4 having the same structure, MnO4, double bond, double bond, and O negative. So both possess the tetrahedral structure. क्या structure है? Tetrahedral. Now, if we talk about the solubility, so they are moderately soluble in water, right? So when you dissolve KMnO4 in water, they are moderately soluble. We can't say they are completely soluble like NaCl and other things. They are moderately soluble in water. Okay, so this thing you need to remember. Their solubility is very moderate in water. Now, on strong heating, it decompose into K2MnO4. यानी जब आप KMnO4 को strong heat कर दोगे, when you heat KMnO4 very very strong, then it will decompose into K2MnO4, right? Plus MnO2 plus O2. So their ions are tetrahedral in nature. We already discussed MnO4 negative, and this is MnO4 minus 2 negative. Okay. Now, manganate is paramagnetic while permanganate is diamagnetic. Why this is? So this is due to the absence of unpaired electron in case of permanganate. Okay. So let's see the electronic distribution. So if we talk about manganese, so manganese having 5 electron in 3D orbitals and 2 electrons in 4s2 orbitals. Okay. Now, if we talk about K2MnO4, they having Mn plus 6. Their oxidation state is Mn plus 6. So Mn plus 6 means what, beta? Their 6 electron will be, they can सो अप टू प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट तो यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचा राइट सो देयर इज ओनली वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लेफ्ट इन विच इज इन 3D series and due to this they are paramagnetic in nature, right? So if we talk about the manganate, manganate is paramagnetic. Why? Because in manganate Mn K2MnO4 Mn having plus 6 oxidation state. Plus 6 oxidation state means they having only one electron, so due to presence of this one electron they are paramagnetic. But if we talk about KMnO4, in KMnO4, the oxidation state is plus 7. So there is no unpaired electron. So there is no unpaired electron either in D or S. So we can say that this is diamagnetic in nature. Okay. So manganate is paramagnetic and permanganate is diamagnetic. So this is very, very, very important thing which you need to remember. Done? यहाँ तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ. Is this clear to everyone? Why manganate is paramagnetic where the permanganate is diamagnetic? Yes, Sneha? Okay, good. Now, the next is chemical properties of potassium permanganate. Ki what are the chemical properties of potassium permanganate, KMnO4? So the very important chemical properties is they are very good, or we say they are powerful oxidizing agents. So they are very good, or we say बहुत ही strong powerful oxidizing agents होते हैं in acidic medium, in basic medium, and in neutral medium. So both in acidic medium, basic medium, and neutral medium, they act as a very good oxidizing agent. Let's take an example. So if we have a KMnO4 and this react with the H2SO4, so they oxidize and convert this into K2SO4 plus MnSO4 plus 3H2O, and साथ ही में ये 5
नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। एंड यही नेसेंट ऑक्सीजन इसको अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनाते हैं। बिकॉज व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन। यानी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर दोस विच हेल्प इन ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन में हेल्प करवाते हैं। कैसे हेल्प करवाते हैं ये? because they have a nascent, they produce nascent 5 ऑक्सीजन। so ये nascent ऑक्सीजन जो है, ये क्या करेंगे? ये जो nascent ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीडेशन करने में हेल्प करेंगे दूसरों का। that's why they are very good oxidizing agent। now in basic medium also they produce this O। तो जो भी बेटा ये nascent ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ना, वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है। बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम ही यही है, ऑक्सीडेशन करवाना। and how they oxidize others by giving this nascent oxygen। Done? Next देखो, in neutral medium, so when this KMnO4 react with water, in this also they produce 3 mole of O। So we can say that they are very good or powerful oxidizing agent both in acidic medium, basic medium and in neutral medium। Why? Because they liberate nascent oxygen which helps in oxidation। समझ आया? Now, remember this thing. In acidic medium, here we have hydrogen sulfide। Let us assume if we have hydrogen sulfide, तो ये hydrogen sulfide, so what is the oxidation number of sulfide here? -2। So they oxidize hydrogen sulfide to H2O and 5 mole of S। So here oxidation will take place. Hydrogen sulfide oxidized to H2O and sulfur। Similarly, if we have SO2, right? If we have SO2, right? 5 mole of SO2. So this react with the 5 mole of H2O to and 5O to give S2SO4. H2SO4. So here also sulfur dioxide oxidized to H2SO4, right? Sulfur dioxide oxidized to H2SO4। Here you can say that their oxidation state is +4, but in this case, oxidation state become +6। Now, next is arsenite, right? Arsenite. So here also, arsenite is converted into arsenate, right? So there also oxidation state is changing। Now, next we have 5 mole of SO3 twice negative, and this react with 5O, nascent oxygen. So sulfide converted into sulfate, nitrite converted into nitrate similarly, and ferrous sulfate is converted into ferric sulfate। So you need to remember this only, right? Because in examination questions were coming, and they say what happened when KMnO4 is treated with SO3। So basically KMnO4 act as a good oxidizing agent, so they can oxidize sulfite into sulfate, nitrite into nitrate, ferrous sulfate into the ferric sulfide, and the last one is hydrogen sulfide to sulfur, sulfur dioxide to sulfuric acid, arsenite to arsenate। So this thing you must need to remember। समझे? देखो अब, similarly, if you have a potassium iodide, then it convert potassium iodide to iodide। Hydrogen peroxide, if you have, they convert it into oxide। Oxalic acid, they convert it into carbon dioxide। So this is an acidic medium, all right? So this is an acidic medium, they convert this। So you need to remember this। ठीक है, सभी को ये याद रखना पड़ेगा कि पोटेशियम आयोडाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो मुझे आयोडीन मिल रहा है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम कर रहे हैं वी गेट ऑक्सीजन। ऑक्सैलिक एसिड से वी गेट CO2। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। नाउ लेट्स सी इन बेसिक मीडियम व्हाट दे फॉर्म। सो बेसिकली here if you have a potassium iodide, तो उसको भी ऑक्सीडाइज करेगा। पोटेशियम आयोडाइड को पोटेशियम आयोडेट में, रिमेंबर, पोटेशियम आयोडाइड को किसमें करेगा? पोटेशियम आयोडेट। सिमिलरली मैंगनीज सल्फेट को किसमें कन्वर्ट करेंगे? मैंगनीज डाइऑक्साइड। सो मैंगनीज सल्फेट कन्वर्टेड इनटू मैंगनीज डाइऑक्साइड। Similarly, sodium thiosulfate converted into sodium sulfate, right? So sodium thiosulfate converted into sodium sulfate। Next we have
They are also used in the volumetric estimation like ferrous salt, oxalate और oxalic acid. जो आप प्रैक्टिकल्स करते हो मोहर सॉल्ट का एक्सपेरिमेंट है ना, आई होप सबने ही किया होगा मोहर सॉल्ट, बिकॉज तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी वो आता है, तो टाइट्रेशन सबने किया होगा, राइट? सो वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन लाइक फेरस सॉल्ट, ऑक्सलेट्स और ऑक्सैलिक एसिड and H2O2, we use potassium permanganate. Next is bleaching of wool, cotton, silk, and other textile fiber. We are using this. Next, decolorization of oils. तो कलर और decolorization करना ऑयल का, वहां भी हम यूज करते हैं. Alkaline KMNO4, that is also known as Bayer's reagent, which also act as a very very good oxidizing agent. ठीक है. So this is alkaline KMNO4, जिसको हम Bayer's reagent भी बोलते हैं. Done. सो यहाँ तक हमने पूरा डी ब्लॉक कवर कर लिया. इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो थे KMNO4 के, उसको भी हमने कवर कर लिया है. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड विल स्टार्ट विद द ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट. ठीक है. तो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लो बेटा, 2 मिनट इन डी ब्लॉक. यस, एनी डाउट यू कैन आस्क, और वी स्टार्ट विद द ब्लॉक. एप ब्लॉक करें फिर, डाउट नहीं है तो. नो सर. ओके. इफ पॉसिबल यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा ऑल्सो, राइट? तो बेटर रहेगा, मैं आप लोगों को भी देख सकता हूँ. दैट्स वेरी यूजफुल, राइट? इफ पॉसिबल ओनली देन यू कैन टर्न ऑन योर कैमरा. चलो. सो लेट्स स्टार्ट विद द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? So what are the block elements? What are the learning objectives? So in this we are learn about the lanthanoids and actinoids, right? What are the lanthanoids? What are the actinoids? What is their classifications and all? So let's see their position in the periodic table first, right? So if we talk about the lanthanides, so in the 4D series, lanthanum atom of D block element. So after La, as you see, the electronic configuration of La is atomic number of La is 57. And after 57, next D block element we have HF, which is 72. So between this 57 and 72, we have 14 electrons, right? 14 electrons of F block elements. They are called lanthanoids. Similarly, in a 4D series, we have an sorry, in 5D series we have a lanthanum, and 6D series we have actinum, right? So if you observe a 6D series, 89 atomic number actinum. After this actinum, the next D block element is RF, another sodium, which is at 104, right? कितने पे है वो? 104. So between this 104 and 89, we have another 14 electrons of F, which is known as actinoids, right? So basically, if we talk about the F block elements, they are classified as lanthanide and actinide. Why? Because the first group starting in the 5D series, right? After the lanthanum, and the actinide start with the sixth period, or we say sixth D series, right? After the actinum. So we have a two groups, lanthanum and actinum. Okay. So these are known as F block elements. Done. The first series is known as lanthanoids because they start with the lanthanum, and the next series is known as actinide because they start by the actinoids. Okay. Now let's see. Let's talk about the lanthanoid first, right?
So we all know how will you write the electronic configuration by above principle. That is 1s, 2s, 3s, 4s. It means in the increasing order of their energy, right? So we'll write in the order of increasing order of their energy. So let's see, we have a PR, right? That is a parasodium. So their atomic number is 59. So how will you write beta? That is 1 is 2, 2 is 2, 2p6, 3 is 2, 3p6, 4 is 2, 3d10, and so on. So they comes at 4f3. कहाँ पे आया ये 4f3? So we can write a general electronic configuration of lanthanoid, that is 4f1 to 14. मतलब जैसे ये 3 पे था तो 3 आया, 1 पे होता तो 1 आता, 2 पे आता तो 2 आता. तो generally we can write electronic configuration of lanthanum as 4f1 to 14, 5d 0 to 1, 5d 0 to 1, and this is 6s 1 to 2. ठीक है, 6s 2. तो 6s 2 हो जाएगा, 4f हो जाएगा. ठीक है, तो 6s कहाँ दिख रहा है आप लोगों को? यस, दिस इज. सो वी हैव एन 6s, 4f, 5d, right? So these three things, 4f, 5d, and 62. So these are the general electronic configuration. Exception of electronic configuration are in La, Ce, Gd, and Lu. Just like in case of 3D series, we have an exception in case of chromium and copper. So here the exception in the electronic configuration, that is La, Ce, Gd, and Lu. Okay, so we can observe. So this is the electronic configuration of each and every element. So we have an exception here in lanthanum, cerium, gadolinium, and lutetium, right? So if we talk about the lanthanum, since it is the first element, so it's supposed to show 4f1, but instead of 4f1, they show the electronic configuration of 5d1, 6s2. Again in ln plus 2 they show only 5d1, and in ln 3 plus they show only 4f0. Okay, similarly cerium they supposed to show 4f2, right? So if you observe very carefully, this is 4f2, sorry, 4f1, 5d1, 6s2. In plus 2, they show 4f1, and in plus 3, they show 4f1 only. Okay? यानी ये देखो, यहाँ से अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला है? तो वो दो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए था 6s2 से. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था ना 4f1, 5d1. ठीक है, 4f1 एंड 5d1. तो ये हो जाएगा 4f1 एंड 5d1, एंड दिस इज नथिंग बट 4f1 अगेन. ठीक है. नाउ अगर आप इसको देखो गैडोलिनियम को, तो इसको होना चाहिए था 4f7, 5d1, 6s2. प्लस 2 में 4f7, 5d1, 6 2 गया, और प्लस 3 में 4f7. अगेन ल्यूटेटियम में 4f14, 5d1, 6s2, दो में गया तो 5d1 बचा बस. ठीक है, तो दिस फोर यू नीड टू रिमेंबर. नाउ अगर आप एटॉमिक और आयनिक साइज की बात करो, सो इनमें बहुत इरेगुलरिटीज है, राइट? बहुत इरेगुलरिटीज है सब जगह. अगर आप जाओ देखो अक्रॉस द पीरियड जाने पे, इफ यू मूव अक्रॉस द पीरियड, देन साइज डिक्रीजेस. बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस भी है कहीं कहीं, राइट? फॉर एग्जांपल lanthanum 187, cerium again 183, then 182, then size remain almost constant, then suddenly in case of europium size become 199, then again start decreasing. ठीक है. सो व्हाट इज हैपनिंग यूरोपियम? तो अगर आप यूरोपियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखो, तो यूरोपियम का क्रिस्टल स्ट्रक्चर के चलते यहाँ पे बिहेवियर देखने को मिल रहा है. सो एटॉमिक नंबर में हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, देयर एटॉमिक नंबर सपोज टू बी डिक्रीज, है ना? एटॉमिक नंबर तो नीचे गिरना ही था एटॉमिक नंबर को. बट व्हाट हैपन हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एटॉमिक नंबर अचानक से यूरोपियम का बढ़ गया, 199 हो गया है. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट? सो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. तो बस यही याद रखना है, दिस इज ड्यू टू द क्रिस्टल स्ट्रक्चर. मतलब ना एफ ब्लॉक की प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक इतना फ्रीक्वेंट नहीं है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होंगे, बहुत कुछ होगा, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टीज एकदम डी ब्लॉक और पी ब्लॉक जैसी नहीं है.
ठीक है। अब देखो, if we talk about the oxidation state, then when you move from left to right in the periodic table, है ना, लेफ्ट टू राइट जैसे पीरियोडिक टेबल में मूव करोगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है, +3 ऑक्सीडेशन, +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। यानी इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, दैट इज +3, एंड द लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2 एंड +4। तो +2 एंड +4 आर द लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेयर द मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर क्या हो जाएंगे, +3। डन। अब देखो, अगर आप सी की बात करो, विच इज एटॉमिक नंबर जिसका 58 है, तो अगर आप देखो तो 4f में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, 4f1, 5d1 and 6s2, right? So they will show four oxidation state. Now C अगर +4 में है तो इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके +3 में आ जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, Pr, Nd, Tb, Dy, वो ऑक्साइड्स बनाते हैं, PrO2, NdO2, TbO2 एंड DiO2। वाई? बिकॉज इनके ऑक्सीडाइजिंग नेचर थोड़ा सा होता है। डन। अब देखो बेटा, इफ यू टॉक अबाउट यूई, ठीक है, यूरोपियम की बात कर रहे हैं हम लोग, सो इसका होता है 4f7, हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या चाहेगा कि मैं जल्दी से दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दूं, राइट, ये दो इलेक्ट्रॉन, ताकि मैं स्टेबल हो जाऊं। 4f7 इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म। यहाँ पे क्या था, ये देखो स्टेबिलिटी में अभी भी वही याद रखो, F0, F7 और F14। जैसे डी में क्या याद रखा था, इन डी ऑल्सो D0, D5 and D10. These three states are most stable. So similarly in this also F0, F7, F14 are the most stable form. So इसके पास क्या ऑप्शन था कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो भी ये स्टेबल हो जाएगा। डन। उसी तरीके से ये अपना दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करना चाहता है, तो ये Ue+2 है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके Ue+3 में जाएगा, यानी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। व्हाट इज दिस? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ वाई भी देखो जो 70 नंबर पे है, तो दे हैव अ 4f14 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 6s2, +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब क्या है? जिसका ऑक्सीडेशन हो सके। ऑक्सीडेशन कहने का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो ये अपना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करा सकता है। वाई? बिकॉज 4f7 पे स्टेबल है, तो ये चाहेगा कि मेरा भाई दो इलेक्ट्रॉन ले जाओ कोई जिसको चाहिए। तो गुड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन मींस कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कराना है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इजली यहाँ पे हो सकता है। डन। अब देखो, सिमिलरली अगर आप टीबी की बात करो तो दे शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इस तरीके से बेटा इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दो तीन आप रिमेंबर कर सकते थे। ज्यादा याद नहीं करना है। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन तो आपके सिर्फ डी ब्लॉक से ही आते हैं। थोड़ा बहुत क्वेश्चन है जो एफ ब्लॉक से भी पूछे जाते हैं। Now, what are the physical characteristics of a block element? First, they are silvery white soft metal. तो they are silvery white होते हैं and they are the very soft metal. Like cerium we have, disoprosium we have. Now, they tarnish rapidly in air. तो बहुत ही जल्दी जल्दी tarnish हो जाते हैं एयर में। Hardness increase with the atomic number. यानी जैसे जैसे atomic number बढ़ेगा, 58, 59, 60, 61, 62, 63, सो हार्डनेस भी यहाँ पे बढ़ने लग जाती है। तो हार्डनेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, राइट। नाउ दे आर अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। सो दे आर वेरी गुड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। Now, lanthanide ions show color in both solid state and aqueous solution. यानी जो lanthanide ions होते हैं, they show color, वो color show करते हैं both in solid state and in aqueous solution. तो aqueous और solid state दोनों में ये color show करते हैं। Done. Now, lanthanoids are paramagnetic except La+3 because they do not have any unpaired electron, C+4, Yb+2 and Lu+3। तो ये पॉइंट जरूर याद कर लेना भाई सभी, कि जनरली लैंथेनाइड्स आर पैरामैग्नेटिक एक्सेप्ट किसको छोड़ के, La3+, C+4, राइट, C+4
and next is Yb plus 2 and Lu plus 3. So apart from these three, they are very, very good paramagnetic, right? Next, melting point and density increase with atomic number. So melting point and density, they are increase with atomic number. कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा 57 से 58 गए 59 60 61 62 63 so as the atomic number increases their melting point also increase as well as their density so their melting point and density both increasing ठीक है दोनों इंक्रीज होगा जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा ठीक है नाउ लेट्स सी द रिएक्शन ऑफ लेंथेनम सो इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन लेंथेनम का रिएक्शन अगर आपको समझना है और याद करना है ना तो जस्ट आप इसको लेंथेनम को ना एल्यूमिनियम समझ लो जैसे एल्यूमिनियम की +3 का होता था ना वैलेंसी तो जो वो रिएक्शन शो करता था +3 वैलेंसी के साथ एज इट इज सारे रिएक्शन ये लेंथेनम भी शो करेंगे तो बस एल्यूमिनियम को रख के सोचो एलन की जगह पे सारे रिएक्शन अपने आप समझ जाओगे नाउ जैसे इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे H2 गैस निकलेगा हाइड्रोजन के साथ एल्युमिनियम को करते थे तो AlCl3 बनता था तो ये भी बना लेगा LnX3 सिमिलरली अगर H2O के साथ ट्रीट करेंगे तो वहां पे एल्युमिनियम को करते थे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता था ये LnOH3 बन जाएगा हाइड्रोक्साइड सिमिलरली अगर मैं हीट करूंगा इसको कार्बन के साथ तो LnC2 बन जाएगा अगर मैं इसको हीट करूंगा नाइट्रोजन के साथ तो LnN बन जाएगा सल्फर के साथ अगर मैं हीट करूंगा तो Ln2 और H3 बन जाएगा और अगर बर्न कर दूं O2 के साथ तो Ln2O3 बन जाएगा ठीक है तो इसका पूरा रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज वेरी मच सिमिलर टू द एल्यूमिनियम बिकॉज इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है ठीक है तो उसकी एल्यूमिनियम की वैलेंसी भी 3 होती थी सो 3 के हिसाब से ही सारे रिएक्शन शो किए हैं अगर आप एसिड के साथ ट्रीट करो तो LnCl3 या Ln2SO4 थ्राइस और हाइड्रोजन गैस निकला हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करो दैट इज LnX3 H2O के साथ अगर आप ट्रीट कर दो तो हाइड्रोक्साइड बना लेगा LnOH3 OH थ्राइस है ना उसी तरीके से अगर आप कार्बन के साथ ट्रीट करो LnC2 नाइट्रोजन के साथ करो LnC बिकॉज नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 एलन का वैलेंसी भी 3 एंड सल्फर के साथ Ln2S3 ऑक्सीजन के साथ Ln2O3 डन नाउ लेट्स स्टडी अबाउट सम एक्टिनोइड्स कि एक्टिनोइड्स क्या होते हैं सो एक्टिनोइड्स आर फ्रॉम द 5F सीरीज ठीक है ये 5F सीरीज में होते हैं हमारे 4F सीरीज में हमारे लैंथेनोइड्स हैं 5F में हमारे एक्टिनोइड्स हैं सो अगर आप ध्यान से देखो तो इन सबको ठीक है इन सबको हम क्या बोल सकते हैं कि सभी के सभी आर्टिफिशियल प्रोसेसेस से बनाए जा सकते हैं ठीक है तो इनमें से बस दो ही है कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं है ना आप बोलो बहुत कम जो नेचर में मिलते हैं ज्यादातर सभी आर्टिफिशियल प्रोसेस से ही बनाए जाते हैं डन अब देखो अगर आप बात करो एक्टिनोइड्स की तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिख लेते हैं फटाफट 5F 1 to 14 6D 0 to 1 एंड 7S 2 राइट एक्सेप्शन कहाँ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्टिनम थोरियम Pa U Np Cm और Lr यहाँ पे एक्सेप्शन है ठीक है डन देखो सो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने अभी पढ़ा था लेंथनम के लिए तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ठीक है 5F7 हाफ फिल्ड 5M14 फुल्ली फिल्ड 5F4 5F3 5F2 6S and 6D1 right so these are the electronic configuration of all the elements now अगर आप बात करो इसका रेडियस का तो इसका रेडियस ना लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज नहीं हो रहा लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज हो जाता है थोड़ा सा मतलब अगर आप राइट से लेफ्ट आओगे तो वैल्यूज बढ़ने वाली है अभी समझाता हूँ कैसे देखो
ये है इसका कुछ। अगर रेडियाई की बात करो, सो एक्टिनम का रेडियस है 111। फिर आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते जाओगे थोड़ा साइज इसका कम होगा। बट इसका कोई रेगुलर ट्रेंड और रेगुलर वैल्यूज जो है वो इतनी क्लियर नहीं है, एक्सपेरिमेंटल डेटास। ठीक है, तो बस यही याद रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो थोड़ा सा साइज इसका कम होगा। मोस्ट अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो थ्री, थ्री इज द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो सभी शो करते हैं, जितने भी है इसमें सभी के सभी दे शो +3 oxidation state, all of them, right? Now, सिल्वरी अपीयरेंस में ये भी होते हैं, हाईली रिएक्टिव, स्पेशली इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म। ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ये सभी के सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं, वहां तो एक्सेप्शन था ना, अपार्ट फ्रॉम दिस दे आर ऑल पैरामैग्नेटिक। यहाँ सभी पैरामैग्नेटिक होते हैं। दे टार्निश इन एयर ड्यू टू द ऑक्साइड कोटिंग एंड द रिएक्शन इज वेरी मच सिमिलर। ठीक है, कैसे? HCl के साथ AnCl3, हॉट H2O के साथ AnH3, NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं, हीटेड विद H2 के साथ AnH3, हाइड्रोजन के साथ AnX4, NO2 के साथ An3O8। राइट। सो ये कॉलम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप दोनों को डिफ्रेंशिएट याद रख सकते हो क्विकली। कि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो लेंथेनॉइड +3 इन मोस्ट केसेस, बट +2 एंड +4 आर ऑल्सो अवेलेबल इसमें। They show +3, +4, +5, 6, 7 and so +7 oxidation state even. Binding energy की बात करें तो binding energy of 4f are higher and they are very lower. Shielding effect. So 4f electron have a greater shielding effect and thus less contraction in ionic radii. 5f electron have a very poor shielding effect. Hmm? So more contraction in the ionic radii. Tendency to form complexes is less. They are highly tendency to form complexes. Less basic, more basic. Only प्रोमेटियम इज रेडियो एक्टिव, ऑल रेडियो एक्टिव है ना। एक्टिनाइड्स में तो सारे रेडियो एक्टिव है, जबकि इसमें से प्रोमेटियम था वही रेडियो एक्टिव था। मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस, इसमें ज्यादातर जिसके आयंस होते हैं वो कलर पैरामैग्नेटिक हैं ये। They are paramagnetic and their magnetic properties can be identified easily. They are also paramagnetic but very difficult to identify their magnetic property. They do not form oxoanion, they form oxoanion like UO2 plus, NPO2 plus and UO2 plus. So this is very important. ठीक है? Now what are their application? DNF block elements. So iron and steel are used in construction, tungsten which is used in electric bulb, titanium which is used in the aircraft, Ti2 is a pigment industries कलर बनाने के लिए, Amino2 ड्राई बैटरी सेल में यूज होता है, कॉपर AgAu कॉइन एज मेटल्स हैं ये, V2O5 कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सिमिलरली AgBr फोटोग्राफी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, राइट। सो दीज ऑल आर द uses of this. ठीक है, so these are the important uses. Okay, so this is all about the D and F block elements. So we all already covered all the D block and their properties. और आज हम लोगों ने P block को भी सॉरी F block को भी कवर कर लिया, राइट। सो नाउ योर चैप्टर इज completed. अब हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में डी और एफ के क्वेश्चंस करने वाले हैं, राइट। तो वहां पे हम लोग ना प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको ट्राई करेंगे। हमारी जब भी नेक्स्ट मतलब कल होगी क्लास तो कल ही हम लोग इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं सभी क्वेश्चंस को हम लोग कवर करेंगे। देन वी आर गोइंग टू एक शेड्यूल बना के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने वाले हैं, जो ज्यादा वेटेज मतलब जेई मींस 1 से पहले जो भी वेटेज वाले चैप्टर्स हैं उनको हम लोग एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, राइट। जो भी ज्यादा वेटेज है पहले उनको कंसीडर करेंगे। ओके, सो यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ, एवरीवन नीड टू फिल दिस पोल, राइट। सभी बच्चे फिल करेंगे इस पोल को।